Welcome back, students. Today is the session 8 from the chapter of electrostatic potential and capacitance, and the topic is parallel plate capacitor. So, in this chapter, we will try to derive the equation for the parallel plate capacitor. ठीक है ना? तो वो हम इसको derive करेंगे. डेरिवेशन करने से फ़ायदा ये होता है कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स विच आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक. कॉन्सेप्ट्स की काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ जाती है, एंड सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक. नाउ ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि वी हैव गॉट टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स. And in this case, I have for the sake of deriving the equation for the capacitance of a parallel plate capacitor, I have taken the charge on this that is the plate as Q, and the charge on this other conducting plate is minus Q. So let the surface area of the plates, इसको आप मान लेते हैं is equal to A. ठीक है. So if the surface charge density is sigma, then we can write down that this sigma is the surface charge density. ठीक है. नाउ यहाँ पर मैंने इस कैपेसिटर को 3 जोन में डिवाइड किया हुआ है. दिस इज द आउटर रीजन, दैट इज द आउटसाइड रीजन, और यू कैन से द रीजन विच इज ऑन दिस लेफ्ट साइड ऑफ दिस कंडक्टिंग प्लेट, और एक ये रीजन है विच इज ऑन दिस राइट साइड ऑफ दिस कंडक्टिंग प्लेट विच इज नेगेटिवली चार्ज. तो ये दोनों रीजन दे आर लाइंग आउटसाइड. ये ठीक है ना, प्लेट्स के बाहर की तरफ का ये आपका रीजन है. तो यहाँ पर जो अच्छा अंदर के रीजन ये है. अब ये आप आई हैव दिस डिनोटेड दीज 3 रीजन बाय 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पर जो इन द इनर स्पेस, दैट इज द स्पेस बिटवीन दीज 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, इसके बीच में जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट विल बी फ्रॉम दिस पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट. क्यों? बिकॉज एक पॉजिटिवली चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती हैं दे आर डायरेक्टेड आउटवर्ड, और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड इनवर्ड. सो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है. सो द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस कंडक्टिंग प्लेट विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड, मीन्स इट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम दैट इज इट विल बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. ठीक है ना, that is it will be directed towards this negatively charged conducting plate. Ab the direction of the electric field due to the negative charge is directed inwards towards the charge. ठीक है, अगर ये चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है, so then the electric field line will be directed inward. So इस केस में क्या होगा, ये आपका नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, so the electrical field line will be directed inward towards the charge, so direction इस प्रकार से हो जाएगी. So the electric field in the space between these 2 conducting plates will be added up, or we can say the electric field. I have written that this E2 is the intensity of electric field between these 2 conducting plates. So that will be equal to what? That will be equal to surface charge density divided by 2 epsilon naught. ये हो गया. This will be because of this conducting plate, और इसके वजह से भी होगा एक. So ये हो जाएगा आपका, this will be equal to sigma upon epsilon naught. अब यहाँ पर जो इन द रीजन 1 and 3,
यहाँ पे जो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, इन द रीजन 1 and 3, और रीजन 1 and 3 में मैं मानता हूँ, लेट अस से इफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इवन, so this will be equal to 0, because the direction of the electric field because of these two charged conducting plate will be in the opposite direction in the region 1 and 3. So E1 will be equal to 0 and E3 भी जो है वो भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना. So दो मेरा so it implies that the value of the intensity of electric field, that is the total value of the intensity of electric field will be equal to 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा surface charge density epsilon naught plus 0, which is equal to this sigma divided by epsilon naught, ठीक है. तो ये आपका हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द केस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा जो है क्या हो जाएगा, अगर इसके ऊपर जो चार्ज Q है, सो दी and if the area of the if the surface area of the plate is A and the charge which is distributed uniformly over the surface of these two conducting plate is Q, इस पे Q है, इस पे आपका माइनस Q है, सो द सरफेस जो चार्ज जो डेंसिटी है वो कितनी हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू Q by A, ठीक है. सो हम इसको ये लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट E जो है यहां से E विल बी इक्वल टू, मैं जिस सिग्मा की जगह पे Q अपॉन A लिख देता हूं, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है. Now we know that the potential difference between these two conducting plate V is equal to E into D, where D is the separation between these two plates. So हम इसको ये लिख सकते हैं, which is equal to Q A एप्सिलॉन नॉट, E की जो वैल्यू है, ये E की वैल्यू, मैंने E की वैल्यू डाल दी, into D. So this is the potential difference between these two conducting plates, which will be equal to Q divided by A epsilon naught into D, ठीक है. So अब यहां में V की वैल्यू मिल गई है. Now the capacitance C, now we know that C is equal to Q upon V. The capacitance of this parallel plate capacitor is given by Q upon C is equal to Q upon V. So यहाँ पर Q है, Q मैंने लिख लिया, ठीक है, और V की वैल्यू है QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. सो QD तो यहाँ पर आ जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा, चला जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है. So the capacitance of a parallel plate capacitor is equal to epsilon naught A upon D, and from this formula you can say that the capacitance of this capacitor is dependent on the cross sectional area or of this capacitor of this conducting plates and the separation between these two conducting
प्लेट्स, इन दोनों के बीच के सेपरेशन और इनका जो सरफेस एरिया है प्लेट का, उसके ऊपर कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट the capacitance will also depend on the this dielectric strength, ठीक है ना, of the medium which is in between these two plates. ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला एंड दिस इज हाउ वी हैव टू डिराइव इट. सो अच्छा, इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो चार्ज है इस कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर क्यू है एंड यहाँ पे चार्ज आपका माइनस क्यू है. सो द टोटल चार्ज जो होता है आपका एक कैपेसिटर के ऊपर, टोटल चार्ज जो है एक कैपेसिटर में, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0. The total charge on a capacitor is equal to 0. ठीक है ना, इसके ऊपर Q है माइनस Q है, तो इफ सो इन दिस वे द टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0. एंड द कैपेसिटेंस आपकी इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट डॉट A अपॉन D. एंड सो कैपेसिटेंस इज डिपेंडेंट, is directly proportional to A and inversely proportional to the separation between these two plates. And the capacitance is also depends on the dielectric strength of the medium which is enclosed between these two plates. ठीक है, so in the next session we will start doing some numerical problems, and then that is in the session number 9. I will be taking up a couple of questions based on what we have studied in this session, and probably I will be uploading that session in a couple of days from now. So thank you very much for joining this session and have a nice day.